So let's begin with the chapter. So this chapter is a part of the series we have, that is Glimpses of India, right? What we learned? We learned that there are certain places in India that are unknown to us, that are unexplored. We don't know about them. We have never experienced those places. So these three chapters tell us about different places, their cultures, how people interact, what are the things to do there, what type of animals are there, what type of scenery is there, what are the things people like to eat, what are the clothes they like to wear, and how is it different from us and how we are living, right? So this particular chapter takes us deep into the Assam. Okay. Uh, Let us first understand now. Unlike other chapters, they are written by different writers, right? It's not like one writer wrote all the three chapters. Okay, different writers wrote different three of the different chapters. Understand ki the way the first chapter is narrated is different from the way the second chapter is narrated. The first chapter was personal. The baker from Goa, it was a personal childhood experience. Whose? The authors, right? The second chapter is more of a descriptive chapter where we get to know about flora, fauna, activities to do, and those kind of stuff, right? The third chapter is also like an experience. Now we have to, like, there is a story. So there is a person who is visiting Assam for the first time, and what are the experiences he is having, right? Mayuri, getting my point? Okay. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. So there are two people here. One is Pranjol and another is Rajveer. They both are classmates and they both are studying in Delhi. Okay. So Pranjol's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So this is like a preface. Matlab, when you are talking about something, there is a context to it. So what is the context? There are two children. One is Pranjol, another is Rajveer. They are classmates. So Pranjol is from Assam, right? And Rajveer is visiting Pranjol's home to see how his father manages a tea garden and experience Assam for the first time. Okay. Chai garam, garam chai. A vendor called out in a high-pitched voice. Do you guys remember the voices we have in train? Right? Chai chai, garam chai, chai garam. Right? So why is it that? Why these kind of voices? Because to attract consumers. Like if you hear normal voices like chai chai chai, people will not give attention. But if there is a high pitched tone, chai chai garam chai chai garam, so now people have your attention, right? So that's why it's like that. A vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked. So now that means it's on a platform, right? So the chai vendor is on the platform, right? So he came close to the window and asked, "Chai saab, do you need chai? Give us 2 cups," Pranjol said. They sipped the steaming hot liquid because chai is steaming hot, right? Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Like everyone in their compartment. So in trains we have compartments, right? So entire compartment, like it starts from 1 to 80. Sitting is there 1 to 80 normally. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like so one compartment, the entire compartment was having tea. Next, everyone, okay, do you know what that over 80 crore rupees of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. So you see, from this you have to understand what type of person is Rajveer. You see, when you really want to know how a person is, you have to understand what type of things he says when he is in conversation with someone. Let's say if you are a friend to a business person, then he will tell you about equity. He will tell you about okay, how to sell something, right? So let's say someone is not that good in studies, but he's great at sports. So he'll be talking more about sports,
and what discipline does, what effect does sports have in one's life. So they have a particular vision, right? Similarly, Rajveer, no, he has a business side to him. That is why he's saying, do you know that over 80 crore cups of tea, 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, right? In the entire world, around 80 crore teas are drunk. That means it's a good market. Why is it certain? Let's say, in order for any business to sustain, in order for us to have a tea gardens, we need a market. We need people who consume tea, who like tea, who like to have tea, who consider tea as a beneficiary thing. If people think that tea is not beneficiary, either you have to be addicted to them, like cigarettes and alcohols. So we know that they are not good for us, but we are addicted to them. That is why people consume them. Either you have to be addicted to them, or you like them, or they are good for you, right? So this is a statement that tells us about Rajveer's personality. So he is kind of into business, right? Phew, exclaimed Pranjul. Oh, so much. Tea is really very popular. So he says, okay, so tea is very popular. Obviously, everyone knows about tea. We call them chai, someone calls them green, someone has green tea, but that is similar to tea, right? Everyone understands what tea is. The train pulled out of the station. Pranjol buried his nose in his detective book again. So now you have to understand what Pranjol's character is. He liked detective books. Do you know? A great detective book is. Have you watched a cartoon named Detective Conan? Detective Conan. It's an anime. It's animation. I think everyone has maybe once तो मैं देखी थी वो. No? Oh no? Detective Conan? Acha. Sherlock Holmes? Do you know about Sherlock Holmes? Books about Sherlock Holmes? Sherlock Holmes? No Sherlock Holmes. Okay. Fine. So Sherlock Holmes is a very popular detective book. Okay. And it has also made into different series and movies. So you know about Iron Man, Robert Downey Jr. He has played the character of Sherlock Holmes in the movies, and Doctor Strange, he has played the character of Sherlock Holmes in the series. It's a very good thing, very good movie and series and books. Books are brilliant. Maybe if you are not interested in books, you can watch the series or the movie. Fine. So detective books are about suspense, right? And how a crime is committed, because there is no such thing as perfect crime. Every crime has certain problems, and as a detective you have to find those loopholes. Do you understand what are loopholes? Loopholes means कमियां. कुछ भी चीज, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कमियां होती है. ठीक, ओके. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. So now we are getting into personalities, right? Ardent fan of detective stories. Like he's someone who enjoys watching detective stories, reading detective stories. So he's into detective stories. Okay, he likes them so much. But at the moment, he was a keener on looking at the beautiful scenery, because when you are going to Assam, you will traveling by train. There are valleys on both the sides, long valleys, grasslands everywhere, right? Covered with greenery. So it's a very beautiful scenery. Along with scenery, you will also observe some mountains and some clouds touching those mountains. These are very beautiful scenery, right? Okay. I will also send you guys some photos, because I will be visiting Assam the coming month. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before, because Rajveer was, we don't know his origin, but maybe he was from Delhi, right? So Delhi is a town. It's very difficult to see a green patch. Artificial greenery is there. Some metros have parks. Parks are there, but at most you will get to see our parks. Fine. So much greenery has never seen. Who? Rajveer. Okay. Then the soft green paddy fields gave away to tea brushes. Okay. Do you know what's paddy? Anyone who understands what paddy is?
Samriddhi, Priyanka, do you know what's paddy? Yes, sir. Okay, basically paddy is rice chawla gachhaku paddy code. Okay, it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Like, understand, so this is like a portrayal of scenery. As far as you can see, you're only seeing greenery and tea bushes. So it's like, you have to imagine that, because the author is forcing you to imagine. This type of things are called imagery. When when a certain sentence or certain words create an image in your mind, that's called imagery, as a poetic device. Fine. So it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes. A sea of tea bushes. Now this is also wordplay, right? Tea bushes are never, sea is what? Samandar. Tea bushes छोटे छोटे पेड़ होते हैं, right? Sea of tea bushes, कुछ समंदर जैसे. That means it's just to say कि कितना बड़ा field है. So much, like it's vast. The expanse is vast. Dwarling, the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Now understand. Now I want to try and draw a sketch. Okay, what he is trying to say? He's trying to say that, like, they're moving through a train, right? Let's say this is a train. They're moving through a train. Uh, it's continuing. Okay, let's say this is the train that's moving right here, and there are green patches like here and here. Okay, as far as the eye could see. But there are certain things, like, why I'm focusing on this is because you need to write them word by word. Like, the tiny tea plants, tall sturdy shade trees amidst the orderly rows of bushes. Like, there are bushes, there are certain trees, and also some big trees, right? So they're ordered in a fashion. They look like dolls. When wind flows, they move like a doll is dancing. You see, from left to right. That's what the writer wants us to imagine. Getting my point, Priyanka, Samriddhi? It's clear? Okay. Everyone is understanding till now what we are studying, right? It's clear to everyone. Okay. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Now you see, so much greenery, right? But if there is a patch of concrete which is emitting a lot of smoke, dust particles, so that's ugly, right? Let's say something like this. So this is ugly. Okay, see, when there is a saying, right? We always have enough for everyone's need, but not for everyone's greed, right? So from that we understand why I'm trying to tell you all of these quotes, why these kind of detail we are going into, because these three chapters will have to look them side by side, compare them with other chapters. We have to look into some themes that are interconnected in all of the chapters. Like, for example, if I say ki nature's importance and nature versus man-made things, if it's a theme, so now that theme we can see in this chapter, in some other chapters also. So this theme will connect those chapters, and we have to write on those points connecting those chapters. This will be a question
on your exams, right? Your exam will be testing you on different chapters and how you connect them. We are going to arrange them on behalf of common themes. Fine. So that is why we have to explore these themes. What are these themes? Okay. So because he is from Delhi, his what he is seeing everywhere: factories, busy roads, noise pollution everywhere. That's also a lot of air pollution. You know, in Delhi there's a lot of air pollution. Suddenly he sees a green expanse. So much greenery he has never seen in his life. And out in those green fields, there is one certain concrete type of thing he is very familiar with, which is emitting a lot of smoke. So that is like creating a contrast, right? In those greenery, those are all natural, right? One man-made thing which is disrupting nature is like a contrast, because it's written like a painting, because the scenery is written like a painting. Okay, because you see, they are explaining it like a painting. Greenery up to which our eyes could see. No, there are bushes and trees and big trees arranged in orderly fashion, dancing like dolls. And suddenly there is a factory that is emitting a lot of smoke. Okay. Do you understand what contrast is? What is contrast? If you have a white blanket and there is a black mark, that black mark is going to be very visible to you. Fine. That's called contrast. Differences. Fine. Clear, everyone? Okay. Hey, a tea garden. Rajveer cried excitedly because Rajveer has never seen a tea garden. Pranjol, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Obviously, if your hometown is Assam and you have been living since your childhood in a tea garden, then you will not be so much excited when you see a tea garden. But Rajveer was excited, right? Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world, right? That means Assam is one of the largest manufacturers of, not the manufacturers, producers of tea. Manufacture is where tea is manufactured into packages. Producers are those where those trees are grown, cultured. Those are different things. Have you studied economics chapters, sectors of economy? Primary, secondary, tertiary. So Assam, the tea gardens are primary sector, right? If you take them, refine them, add some scent, do marketing, package them and sell them, it's a secondary sector, right? Okay. You will see enough gardens to last you a lifetime. That means there are so many gardens. लाइक ऐसा हिंदी में एक बात होती है ना, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी तुम देखते रह जाओ, इतने सारे गार्डन्स. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. I have been reading as much I could about tea, Rajveer said. Rajveer said कि यार I've been so excited. I've been reading as much as I could about tea. No one really knows who discovered tea, but that there are many legends, because there is no history, because you know tea is found at lot of places in the world. So कोई बोलेगा यार इंडिया में बना था, इंडिया का एक कहानी है. कोई बोलेगा चाइना में बना था, उसका एक कहानी है. जापान में बना था, उसका एक कहानी है. समझ रहे हो, यूरोप में बना था, उसका एक कहानी है. तो सबका अलग अलग कहानी है. लेजेंड्स आर लाइक स्टोरीज, राइट? सो नोबडी नोज हु एक्चुअली डिस्कवर्ड टी, but everyone have legends. What legends? Well, there's the one about Chinese emperor. Now see, we are diving deep into legends. So these legends are about discovery of tea, how different cultures describe how they found tea. Okay, so this is about one Chinese legend. Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. So there was an emperor who boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. One day, a leaf suddenly fell into the water by accident. Okay, and when he had that water, he was delighted to see it had a different taste, right? Okay, a delicious flavor. It is said that they were tea leaves.
Okay, so it was like the Chinese legend is basically mere coincidence. Like mm, he was going to have his daily routine boiled water. By chance, it happened. A tea fell into that water, and he when he had that tea, he was filled with joy because it was delicious in flavor. Right? Tell me another, scoffed Pranjul. Pranjul said, "Acha, sabhi kahani hai." See, now you see there is also contrast here also, because Pranjul is from Assam. He has never thought about tea so deeply. What are these tea gardens? He has always seen these beautiful sceneries. It's not of that much importance to him. But for Rajveer, he knows nothing about tea. So he is studying more about tea, how are they discovered. So he is telling the stories about tea to Pranjol, who has been raised in tea gardens. Understand the contrast here. एक लड़का जो टी गार्डन में ही पैदा हुआ है और अपनी जिंदगी जिया है, उसको टी के बारे में एक दिल्ली के बच्चे से सुनने को मिल रहा है जो पढ़ पढ़ के उसको सुना रहा है. समझ रहे हो? हाँ, वो हमको बैकग्राउंड नहीं है, बट दिस इज लाइक अ, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यार राजवीर दिल्ली से ही है करके. दिस इज जस्ट बाय यू नो, इतने हर जगह वहां पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किए गए हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कहाँ से, एक मेट्रो टाउन से. तो दिस इज लाइक, यू कैन नॉट राइट कि राजवीर वाज फ्रॉम दिल्ली. You cannot never mention in any of your answers that Rajveer was from Delhi. But we are clear at certain point, okay, Rajveer was from a metropolitan area. Okay. We have an Indian legend too. So now Rajveer is diving deep into an Indian legend. Bodhidharma. Do you know about Bodhidharma? Who is Bodhidharma? Monk. हाँ, monk तो sure, but Indian Buddhist monk. A Indian Buddhist monk. Okay. Actually, he is also a legend. Bodhidharma. Movie जो साउथ वाला. हाँ. अच्छा. हाँ, तो साउथ वाला ही हुआ ना. हाँ, उसमें थोड़ा सा सच्चाई है, लेकिन पूरा सच्चाई नहीं है. ठीक है, तो he is basically an ascetic. Do you know what's an ascetic is? Who is an ascetic? तो छोड़ देता है materialistic world को. You know, someone who leaves behind his cars and home, his family, his everything in search of truth. Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Okay, so he cut off his eyelids. These are your eyelids. He cut those off. Why did he do that? Because मेडिटेशन करते वक्त उसके आंखें गिर जा रही थी जब उसको नींद आ रहा था, तो उसने काट दिया अपने आईलिड्स को. 10 tea plants grew out of the eyelids. तो those eyelids, वो eyelids से 10 tea plant उठे. It's a legend. Okay. The leaves of these plants, when put in hot water, drunk banished sleep. Like obviously when you have tea, you don't feel sleepy. So it's like a legend where we say, okay, he's saying, see, this also has a deeper meaning, right? Why did he cut those eyelids? Because he was feeling sleepy. From those eyelids, a plant grew whose only target is to cut sleep, right? Why do you drink tea? To feel fresh, right? In the morning, people usually have tea because to feel fresh, not feel sleepy at all. This is a legend. Don't take it literally. Okay, this happened. We don't have a video recording of this happening. Fine. Next, tea was first drunk in China. Now we have two legends, okay? And you will be asked about how these legends, this is a Chinese legend, this is an Indian legend, okay? You will be asked in your questions to compare these legends. First, compare these legends and basically understand the meaning behind. Like for example, in the first one, this is pure mere coincidence. In the second one,
it's like a fiction. It's basically mythical story, some supernatural thing. Cut your eyelids and tea plant went grew from them, right? Okay. Tea was first drunk in China. Rajveer added. Now Rajveer is now continuing his story, right? As far as back as 2700 BC. Do you guys know what is BC? Before Christ. And AD is Anno Domini. That means, understand, when Jesus Christ took birth, that was 0. That year is what? 0. It's like a number line. This is 0. Jesus Christ took birth. Okay. From here onwards, we are in 2025. So that means 2025 years has passed since the birth of Jesus Christ. We are talking about 2700 BC. That means 2700 years back of 0. Fine. So how many years till now? 4725. 4725 years. Getting my point? This is in negative, BC. This is in positive, AD. Clear? This like a number line. Clear? Everyone clear? Okay. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. Chini, chai, tea. These are words from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century. You see, 16th century is like here. 1500 something, 1501 to 1600, like, okay, and was drunk more as medicine than as beverage. People thought of it as a medicine. Okay. The train clattered into Mariani Junction. Do you know what's a junction is? Have you guys ever visited a junction like Khorda Junction? Why is it called a junction? A junction is a place where engines can switch from one end of the train to the other end. Like for example, it's if we compare the Bhubaneswar Khorda Junction, okay, there are 3 major routes, and the Khorda is a chalk. One route is to Puri, one is to Hyderabad and Berhampur and those places, one route is to Bhubaneswar, right? So all these 3 routes meet here at this point. That is why it's called a junction. So junction is just like a chalk. Junction is just like a chalk. Okay, everyone clear? Okay. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Okay, it was a crowded platform, and you move through a crowded platform, right? Pranjal parents were waiting for them. Soon they were driving towards Bari. Now we'll be seeing some pictures of Bari and Mariani Junction. Okay, let us see some pictures. See, this is the junction. See how they are changing their tracks. Whenever you visit a junction, there will be tracks that are overlapping, because trains will be switching their lines. Some Mariani Junction. It's in Assam, right? इस जगह सोच के जाए सच्चाई हैरान कर देगा. This is clickbait. Okay, next is Bari. Next is Bari. So the train point was Mariani Junction. Then by road they were going to Bari. Obviously there are no train lines in Bari. Badi, Badi. Badi is valley. Fine. Badi is a place where trees are grown. That's called a badi. I'm a badi kuchalo. Like that is what? अबे घर जोटी
backyard, right? Similarly, valley is a body, a big body. Okay, so this is a valley, right? You see, these are like sloped areas, right? So the crops are cut, just like here. Have you seen crops? Have you ever went to a field and see crops, observed crops, how they are going? Like there are headers, right? Steep walk, which is cutting all the crops. Like Shraddha's field is there, Janvi's field is there. How do you know that Shraddha's field and that Janvi's field? So there is a header that's cutting them, right? And right, okay. But here it's a valley area, so you don't have headers. You have a header is like upwards. Our crops are grown down. Here the crops are up. You work down. Fine. Hello, ulta. Okay. Next, you'll see. Okay, the Dhekiabadi, there is a tea garden which is managed by Pranjol's father. Okay. An hour later, the car veered sharply off the main road. From the main road, now they are going into the suburban roads, like suburban village roads. Like Pichu Rasta ru, samane Matti Rasta kasi. Fine. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. On both sides of the gravel road, gravel means body, gravel means stone. So it's made up of gravel. Okay, it's not pitchu road, stone road, body road. Where acre upon acre of tea bushes. So acres and acres of tea bushes. Okay, I will also show you a vlog after this. Okay, all neatly pruned to the same height. Prune. Do you know what is pruning? Have you seen a government building in Bhubaneswar? The trees there are shaped of different sizes. There is a Mali who comes every day in the morning and trims those things, right? That's called pruning. Pruning means trimming trees. Fine. Neatly pruned to the same height. So all of those have tea bushes have the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons. They are wearing plastic aprons and bamboo baskets on their back. Were plucking the newly sprouted leaves. So they are plucking leaves, throwing in the basket. I will show you one minute. Let us have a visual thing. Okay. It's one of the tea gardens. Your email is your first online impression. Make it count. With Okay. See. Dear Something like this. Fine. So no plastic apron here, but they're saying they have a plastic apron. You know what's an apron is, right? During cooking, you have seen people wearing aprons. Okay. So this is like a bamboo basket. They're plucking the tea leaves and putting it inside the basket. नदी उसके पास में चाय बागान है। ये नाम क्वीन ऑफ हरमती का नाम में ये चाय बागान स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1870। चौथे नंबर पे है कोरा मोरा टी एस्टेट, इसको चला रहे हैं। Something like this. So you see the trees are of the same height. Fine. And these are some of the bigger trees, just like we have in the imagery scenery. Okay.
चौथे नंबर पे है नदी है जय। So this is a like a everyday scenery of a tea garden. Hmm. Some other tea gardens from Assam. You can see this is a tea डिस्ट्रिक्ट garden. असम का एरिया और ये लार्जेस्ट ऑल ओवर एशिया। और 10वीं नंबर पे है नोनोई टी स्टेट रंगामाटी। ये रंगामाटी इसका नाम क्योंकि यहाँ का एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस वाटरफॉल जिसका नाम है इन्वायरमेंट। These are like the roads. How the scenery? Okay. So Pranjol's father slowed down to allow a tractor. So they slowed down to allow a tractor to pass through, right? Pulling a trailer load of tea leaves to pass, right? A tractor has a trailer. Do you know what's a trailer, right? Tractor पछे बड़े जो डबाड़ा था जो तेरे बुहान थी, right? This is the second flush or sprouting period. So like there are two flush, like that means in the total year there are certain seasons where they seed, they mow the soil and they seed means seeding, seed को लेके जमीन में दबाना, right? And there is certain reasons where they row and there are certain reasons when they pluck means when they pull out those leaves. There are two flushes. One is during from May to July and it has the best tea. And there is also another period. You see, if there is only 2 or 3 months where you can grow teas and the other months will be wasted. So there are several methods in agriculture where you either use two type of crops together. Like you know about Rabi crop and Kharif crops, right? So there is a ash burn and ash burn method. I think I don't remember the name correctly. Like they burn everything, then they again put in some different kind of seedlings, slash and burn method, right? They burn everything, it's ready for another type of plant. Okay. These kind of things actually happen more in Haryana and Uttar Pradesh. That is why Delhi has a lot of air pollution. That is the reason why Delhi has a lot of air pollution. Okay. You seem to have done your homework before coming, because you see, Rajveer said this is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? That Barua is the title of Pranjol's father, right? So he knows his things, right? He has researched about tea and how they are grown, what seasons they are mowed and what seasons they are plucked. So he's saying, okay, it lasts from May to July and it's the best tea. You seem to have done your homework before coming. Who said? Pranjol's father. So when you're visiting some place and you already have some facts, na, people love you. Those people really acknowledge you because they never think कि अच्छा एक बंदा रिसर्च करके आएगा और बोलेगा कि अच्छा ये मतलब उनके लोकल लैंग्वेज में लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो वर्ड्स की यूज़ करके वो बोलेगा कि अच्छा ये शायद सेकंड फ्लश है. तो पीपल आर इम्प्रेस्ड, दे लाइक यू मोर, दे वेलकम यू मोर. So these are like certain things. When you are visiting a place, if you know certain things about the place, you have something to talk about with those locals. You have a conversation starter, right? Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. So what he is hinting at is he's visiting Assam, right? So he wants to learn how this business is done, what are the type of teas, qualities they are sorted. Like for example, you also have different kind of teas. One is premium, one is not premium. What is so premium about that tea? So there are certain quality check marks, right? Just how to sort them, how what conditions give rise to best tea, on what condition tea fails. So these are certain things you will be learning there. So if you want to learn from someone,
if you have already have some fundamentals clear and you convey that to the person, that person will also be willing to teach you. अगर तुमको किससे कुछ सीखना है, तुम अगर थोड़ा सा भी कुछ उसके बारे में जानते हो और तुम पढ़ ले हो यहाँ वहां से, और तुमने वो बात बोला और तुमने बोला कि मैं इतना, तुम बोले ये बात, तो वो इम्प्रेस हो गया क्या, अरे ये बंदा इस जो जिंदगी भर रहा है शहरों में, उसको ये सब चीजें पता है, तो वो इंटरेस्ट लेगा। तुम फिर पूछोगे कि यार मुझे सीखना है, तो वो इंटरेस्ट लेके सिखाएगा भी। ये कन्वे किया था और खत्म होता है। देखो ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स क्या चाहते हैं तुमसे, ये चाहते हैं कि यार तुम अलग अलग प्लेसेस को एक लेंस के थ्रू देखो, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस को देखो और समझो वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे कोई प्लेस वॉरियर के लिए फेमस है, जैसे कि कूर्ग, कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस है वहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, रिवर राफ्टिंग होता है, नो माउंटेन बाइकिंग होती है, रैवलिंग होता है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, कैनोइंग होता है वहाँ पे, बर्ड्स और एनिमल्स क्या क्या मिलते हैं, है कि नहीं, ट्रैवलिंग नहीं रैपेलिंग। और हमने और देखा गोवा क्यों फेमस है वहाँ पे, अ, वो ब्रेड क्यों खाते हैं, क्या रीज़न है, हम लोग तो रोटी खाते हैं, वो लोग ब्रेड क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं, पोर्तुगीज़ वाले लोग हैं, उन लोग का ब्रेड जो है, उन हमारे लिए जैसे रोटी और चावल है, उनके लिए ब्रेड वैसा है, इसलिए वहाँ पे खाते हैं। वहाँ पे बेकर्स फिर हुआ करते थे जो ये लोग बनाते थे। तो हमको क्या ना, हमको एक सर्टन प्लेस के बारे में कुछ डेप्थ में कुछ डिटेल समझ में आए। इंडिया में अलग अलग जगह पे हम लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग अलग अलग जगह हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो मिलेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा जगह है, तुम सारे प्लेसेस तो नहीं विजिट कर पाओगे। वर्ल्ड छोड़ दो, इंडिया ही इतना बड़ा है कि तुम सारे प्लेसेस विजिट करके नहीं समझ पाओगे। और अगर तुमको पता है, अगर किसी को कुछ सीखना ही है ना, मतलब इंडिया के बारे में, तो ट्रैवल करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मम्मी पापा के पास चले गए, घूम लिए, होटल में रह गए, मस्त एकदम एसी वैसी रहा, सुबह सुबह उठ रहे, स्विमिंग पूल में नहाए, एंजॉयड वैकेशन, रिटर्न आ गए घर, ऐसा नहीं। मतलब कुछ कुछ पैसों के साथ तुम खुद चले गए या कुछ दोस्तों के साथ चले गए, तुम जो जो प्रॉब्लम्स आए उनको ना ओवरकम किए, फिर कुछ दोस्त बनाए, फिर कुछ अलग जगह गए, वहाँ पे कुछ और दोस्त बनाए। ये जो तरीका है, इससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तुम्हें समझ में आता है कि तुम जैसा सोचते हो कि यार वो तो बहुत जैसे कि उड़ीसा को ना लोग सोचते बिछड़ा हुआ जगह है। जब मैं मुंबई में रहता था, वहाँ पे लोग ऐसे ट्रीट करते, मैं बोलता तुम कहाँ से हो, मैं उड़ीसा से हूँ, ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि बहुत बिछड़ा हुआ जगह है, उनको पता ही नहीं ऐसा है करके कुछ जगह, ऐसे ट्रीट करेंगे कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया के मैप। बस कोई कोई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है कि रथ यात्रा का है, तो वो खाली उनका है कि सीबी पूरी के बारे में पता है खाली, और कुछ नहीं पता है। समझ रहे हो? तो जैसे सोचो तुम भी तो कभी गए नहीं हो ना ऐसे जगहों पे, असम हो गया, गोवा हो गया, तो ये चैप्टर्स बेसिकली हमको एक व्यू पॉइंट देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं। देयर इज सो मच मोर टू लर्न, देयर इज सो मच मोर प्लेसेस टू विजिट, सो मच मोर टू सी, टू एक्सपीरियंस। दिस इज अबाउट नाउ। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तीन चैप्टर्स में, पहला चैप्टर जो था वो एक पर्सनल मेमोरी था, ठीक है। सेकेंड चैप्टर डिस्क्रिप्टिव था, टूरिज्म जैसा था, है ना। थर्ड चैप्टर भी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि दो लड़के निकल के जा रहे हैं। एक लड़का जो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ता रहता है, जो जिंदगी भर अपना बिताया हुआ है पेड़ों के बीच में, टी गार्डन्स में, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन राजवीर जो कि लग रहा है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया से है, उसको बहुत इंटरेस्ट है, और वो अपना रिसर्च करके लेके जा रहा है, और वो उस बंदे को बता रहे कि यार टी के बारे में, जो रहता है टीओ के साथ, मतलब चाय के साथ जो रहता है, पैदा हुआ है वहीं पे, उसको वो समझा रहा है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देता है, थोड़ा कॉन्वर्सेशनल टोन देता है, ठीक है। अच्छा, और तुमको इन चैप्टर्स में कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स भी मिले और कुछ सिमिलर एलिमेंट्स भी मिले। चलो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स क्या मिले, ये तो मैंने बात कर लिया, एक्सपीरियंसेस का अलग अलग था, डिस्क्रिप्टिव था, टोन वहाँ पे पर्सनल था, यहाँ पे भी एक कॉन्वर्सेशनल टोन है। और सिमिलर एलिमेंट्स क्या मिले, हमें समझ में आया कि यार अलग अलग जगह के सीनरी अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, वहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कल्चर अलग अलग होता है।
और हमें क्या समझ में आया, और हमें समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि तुम अगर उड़ीसा में भी रहते हो, तुम अपने गांव में भी रहते हो, तुम्हें अपने गांव के बारे में, गांव में भी कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जो तुम्हें शायद नहीं पता, जो शायद किसी और को इंटरेस्टिंग लगे, जो कि हमने प्रंजोल के केस में देखा। प्रंजोल जो कि टी गार्डन में पैदा हुआ है, उसको उतना नहीं पता है चाय के बारे में, लेकिन देखना जाए तो बहुत कुछ है चाय के बारे में समझने के लिए। वैसे ही तुम सब, आप सबका कोई ना कोई नेटिव प्लेस होगा, है ना, सब कोई अगर अपने नेटिव प्लेस को विजिट करके उसके इम्पोर्टेंस को समझते हो, या कुछ तो होगा खास, कुछ तो बातें होंगी जो शायद मैंने नज़रअंदाज कर दी हो अपने नेटिव प्लेस के बारे में, तो शायद तुम्हें कुछ और सीखने को मिले। ठीक है, कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें इसके बारे में, चलो बात करते हैं। मैं एक्चुअली, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था कि हर बार तो हम लोग हिंदी में उड़िया में बात कर देते हैं, अगर मैं एक बार इंग्लिश में क्लास करूँ तो क्या होता है। तो मैंने बस एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यार क्लास थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है अगर हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। तो वो इसलिए है, दो रीजंस के वजह से। एक तो मुझे अपनी आदत बनानी पड़ेगी, अपने एक्सप्रेशंस और अच्छे से लाने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। दूसरा ये कि तुम लोगों को भी वो फीलिंग्स नहीं आ रही है जो हिंदी में मैं बोलूँगा तो आएगी। समझ लो, जैसे भाई मैंने ये सब चीज़ें अगर हिंदी में बोली तो तुम लोग को ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश में बोले तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इमोशनली तुम लोग नहीं सोच रहे इंग्लिश को लेके, लेकिन इंग्लिश को लेके हमें इमोशनली सोचना है, तभी हम उसको एज ए लैंग्वेज समझ पाएंगे और अपना पाएंगे। समझ रहे हो बात। तो मोस्टली मैं क्या करूँगा ना, हाइब्रिड करूँगा इंग्लिश और हिंदी, ऐसा जब भी ज़रूरत पड़े, ताकि तुम लोग इंग्लिश में भी फील करो वो चीज़ जो हम लोग हिंदी में नॉर्मली फील करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अ हेवी डैश हैज़ बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ व्हाट आर दिस? यूज द वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस बिलो, यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी। अच्छा अच्छा, ये तो भाई ग्रामर है, इस चैप्टर के साथ कुछ रिलेशन नहीं है इसका। कुछ भुवनेश्वर लिखा था। अच्छा, भुवनेश्वर। कुछ और चैप्टर के रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? नहीं, ठीक है, चलो कुछ कहीं और से क्वेश्चंस निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे? ये अपना ना टी फ्रॉम असम। तुम लोग को कोई देख रहा है क्या? हेलो, चैप्टर नेम। हाय सर जी, क्या पढ़ा रहे हो? सर मुझे समझा नहीं। सर क्या लिखा रे? ठीक है सर। मार्टून कब होगा? अच्छा, मैराथन, मैराथन कब होगा? अच्छा अच्छा, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। प्लीज सर बताओ ना। होगा होगा, करेंगे करेंगे, मैराथन्स करेंगे, एग्जाम से पहले करेंगे, नोट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस निकालेंगे, करेंगे करेंगे। ठीक है ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, ये सवाल तो बहुत इजी है। प्रंजोल कौन से स्टेट से है? व्हाट वाज प्रंजोल्स फादर? अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सवाल है व्हाट वाज प्रंजोल्स फादर, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? कि क्या, कहाँ से, क्या है, मतलब क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो क्या करते हैं उसके पापा? टी गार्डन में मैनेजर हैं भाई। कहाँ पे? नाम बताओ वो असम गार्डन। ढेकियावाड़ी, ब्यास ढेकियावाड़ी। अच्छा, तुम लोग को स्पेसिफिक होने में दिक्कत है। व्हाट कुड राजवीर सी एज फार एज इज आई कुड सी? वास्ट लशी ग्रीन टी बुशेस, है ना? अकॉर्डिंग टू राजवीर, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक डेली? 80 करोड़, 80 करोड़ टी कप्स। 80,000 नहीं भाई, 80 करोड़,
80,000 बोल दे रहा है भाई। 80,000 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं बता दो जरा। 80,000 करोड़, ठीक है। When was the tree drunk first in China? चाइना में पहली बार चाय कब पी गई थी? 2000 BC। अभी से कितने साल पहले? 4725, है ना? ठीक है। वेयर वॉज प्रंजोल्स फादर टी इस्टेट सिचुएटेड? कहाँ पे? ढेकियावाड़ी। अच्छा, व्हाट इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू ढेकियावाड़ी? मारियानी जंक्शन। अरे ये धुल्लावाड़ी लिखा है, इसको चेंज कर देना, ये मतलब ढेकियावाड़ी है वो, ठीक है। पर हाँ ठीक है ना, समझ गया ना तुम, हमको क्वेश्चन से मतलब है। व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रंक? चाइना, अलग अलग चाइना ही है, 2700। When did Bodhidharma cut off his eyelids? Why did Bodhidharma cut off his eyelids? Mayuri, why did Bodhidharma cut off his eyelids? बोधिधर्मा ने अपने आंखों के पत्ते क्यों काट दिए? मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही कुड नॉट, he felt sleepy and could not meditate, so he was so determined, he cut off his eyelids। फिर उसमें से उगे टी के पत्ते, और फिर वो क्या काम किए? नींद भगाने का काम किए। देख रहे हो कितनी बारीकियां हैं कहानी में। बोधिधर्मा मेडिटेट करते समय नींद आ रही थी, उन्होंने आग के पत्ते काट दिए, उसमें से उगे टी के पत्ते, जो क्या काम करते हैं? नींद भगाने का काम करते हैं। हाँ, क्या क्या? When was tea first? तो when was मतलब where होना चाहिए, पर ठीक, ठीक है। तुम बारीकियां अच्छा समझ रहे हो, तो ये बारीकियां मेंटेन करना अपने आंसर राइटिंग में भी, ठीक है। When did tea come to Europe? तुम बोलो जानवी। ये चाय यूरोप कब आई? मैंने वो ग्राफ में दिखाया था नंबर लाइन में, कब आई? वही 6 कब आया रे यूरोप? कब आया? 16th सेंचुरी में आया। अरे मैं तो बनाया तो था ये, हाँ अरे बनाया तुम। वो क्या है कि तुम थोड़ा सा ये क्या लाइन डालो मैं, ये मैंने क्यों लाइन डाला इधर? ये मैंने बताया बहुत बाद यूरोप में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड टी कम टू यूरोप? अच्छा हो गया। हु कट हिज आईलिड्स? बोधिधर्मा। अच्छा, व्हाई डिड राजवीर विजिट असम? श्रद्धा, व्हाई डिड राजवीर विजिट असम? क्या जरूरत पड़ गई राजवीर को असम जाने की? घूमने के लिए। लिखा तो नहीं गया है क्यों गया था वो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताना है तुमको, सो इट्स पर्सनल। बोलो तो क्या है? ही वॉज एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड टी। उसका एक एम एम्बिशन था भाई, इसलिए तो चाय के बारे में पढ़ के गया, उसके पापा से बात किया कि धंधा कैसे चलाते हो आप। अरे तुम लाइटली ले रहे हो, अरे था उसका एम, इसलिए ना पढ़ के गया, इम्प्रेस किया, और पापा बोले कि ठीक है पढ़ा, बता देंगे तुमको। Rajveer had been invited by his classmate Pranjol, who was from Assam, to visit his home during the summer vacation. सेकेंड फ्लश कब तक होता है? मई टू जून, जून या जुलाई? अच्छा अच्छा, ये बताओ, डिस्क्राइब द मैग्निफिशेंट व्यूज। मैंने बोला था ना, उसको मैं डिटेलिंग में बोल रहा था डायग्राम करके, ये ऐसा पूछेगा तुमको, ये मैग्निफिशेंट व्यू को डिस्क्राइब करो। तो वो भी करके दिखाया ना मैंने। बनाया था रे, जंक्शन में ऊपर बनाया था थोड़ा हिस्सा, ठीक है। पेन पिक्चर, अच्छा सुनो एक मिनट, पेन पिक्चर का मतलब ये नहीं होता कि तुम ड्राइंग करो,
पेन पिक्चर का मतलब होता है लिख के पिक्चर ड्रॉ करो, मतलब ऐसा एग्जांपल मैं बोल दूंगा कि यार मुझे बिना ड्रॉ किए बताओ कि आशुतोष कैसा दिखता है, मतलब ड्राइंग नहीं करना है, बिना ड्रॉ किए बहुत बता सकते हो कि नहीं, उसकी हाइट इतनी है, इसका वेट क्लास इतना है, उसका वो ऐसा हेयर कट करता है, फिर उसके बातों में ऐसे, उसका लहजा ऐसा है बात करने का, उसका तरीका अलग है, ऐसा कर सकते हो कि नहीं। तो क्या लिख के किसको डिस्क्राइब करना तो हम बोलेंगे क्या, अरे नहीं वो ऑटर, हाँ ठीक है, अरे वो मिजविल दी ऑटर का फोटो दिखा रहा है, अरे लिख के बताना है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा देखो, द टी बुशेस वेर स्प्रेड लाइक सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, पूरा ऐसा ही लिखना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। ये पूरा ऐसा समंदर जैसा है, समंदर जैसा क्या है, टी बुशेस है, और बैकड्रॉप में क्या है, वुडन हिल्स है, और ऑर्डरली फैशन में बुशेस और ट्रीज हैं जो कि डॉल जैसे हिलते हैं, पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। amidst the orderly rows of tea bushes were doll like figures plucking, अच्छा, एक मिनट, हमने कुछ गलत किया गया इधर पढ़ने में। amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures, ओ हमने गलती कर दी है यहाँ पे समझने में। ये डॉल लाइक फिगर्स वो व्यक्तिजन हैं जो टी प्लक्स करते हैं, ठीक है। ज्यादा पेंटिंग में घुस गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा है, ये है ट्रेन, ठीक है, फिर ऐसा 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 कटिंग में हुआ होगा सब, as far as the eye could see, ऐसा, फिर इसके पीछे पेड़ होंगे ऐसा, फिर यहाँ पे होंगे पहाड़, और ये जो तुमको बीच बीच में फंदे दिख रहे हैं, ये रास्ते, ये बने हुए रास्ते जो बीच में बन गए, यहाँ पे तुमको डॉल लाइक फिगर्स दिख रहे हैं। डॉल लाइक फिगर्स मतलब ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बास्केट पकड़ के क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं टी गार्डन्स में, समझ रहे हो, ठीक है ये चीज। अच्छा कुछ और, अच्छा ये जो टी गार्डन है, ढेकिया जूली लिखा है देखो, ढेकिया बाड़ी में जो टी गार्डन है उसको राजवीर कैसे डिस्क्राइब करता है। अबे मैं बोल रहा हूँ ना ढेकिया बाड़ी, सुन मेरा क्वेश्चन सुन, ढेकिया बाड़ी में जो टी गार्डन है उसको राजवीर कैसे एक्सप्लेन करता है। पहले एक काम करते, पहले ना मैं इसको ना मैं बस कीवर्ड्स में तोड़ देता हूँ। सोचो कि मैंने बोला कि अब इसको लिखना है तुमको, ठीक है, राजवीर क्या बोलता है, और फिर हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करें। वो बोलता है कि यार ग्रेवल रोड के दोनों तरफ, मतलब वो जो रास्ता था वो रास्ते के दोनों तरफ उसको एकर्स और एकर्स ऑफ टी बुशेस दिखे, और वो टी बुशेस कौन सा पीरियड था, स्प्राउटिंग पीरियड था। तो लोग वहां पे बास्केट पकड़कर एक अप्रोन, प्लास्टिक का अप्रोन पहनकर टी के पत्ते निकालते थे और बास्केट में डालते थे, ये उसका प्रेजेंटेशन था। अब इसमें मुझे बताओ कि तुमको एक्सप्लेन इसको अगर इंग्लिश में करना है तो ये क्या कीवर्ड्स उठाओगे इसमें से। देखो सबसे पहले तो ये बताना है कि यार एकर्स और ग्रेवल रोड था, दोनों साइड पे एकर्स ऑफ लैंड थे, टी गार्डन थे। कैसे बताओगे उसको, कैसे बताओगे। राजवीर एक्सप्लेन्ड on the both sides of the gravel road there were acres and acres of tea gardens। और वो कब कौन सा चीज चल रहा था वहां पे, स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा, तो स्प्राउटिंग पीरियड वाज गोइंग ऑन। देखो कीवर्ड से सेंटेंस आ जाएगा, स्प्राउटिंग पीरियड वाज गोइंग ऑन। पीपल वेयरिंग प्लास्टिक aprons used to pluck tea leaves and put it inside their bamboo baskets। बस एकदम सिंपल ही लिखना है तुमको, समझ रहे हो। लेकिन ये सिंपल लिखने से भी तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने ये सारी चीजें टच की। तुमने ग्रेवल रोड के बारे में बताया, तुमने एकर्स और एकर्स ऑफ लैंड के बारे में बताया,
तुमने बताया कि स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा था, तुमने ये भी बताया कि वो जो लोग थे वो क्या पहन रहे थे और कैसे पत्ते तोड़ के बास्केट में डाल रहे थे। अगर तुमने सब चीज़ें लिखी तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि तुमने उसमें बहुत अच्छी खासी इंग्लिश डाली है नहीं डाली है, यही है चीज़, कीवर्ड्स के ऊपर लिखना। ठीक है, डिस्क्राइब द सीनरी तो बात कर ली हम लोग बार बार, जब ट्रेन रुका था तो ऐसा सी जैसा, ये वाला याद ही रख लेना, ये तो ये वाला चीज़, sea of tea bushes against the backdrop of densely wooded hills, amidst the orderly rows of tea bushes were doll-like figures plucking tea leaves। ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट भी होता है। चलो अच्छा, ये अगर ये क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू से दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, तो कुछ एविडेंस तो है नहीं, डिस्कवरी का बस एक लेजेंड है। एम्परर जो थे चाइना के, वो गरम गरम करके पानी पीते थे, है ना। फिर क्या हुआ ना, एक दिन पानी गरम जब हो रहा था, एक पत्ता आके उसमें गिर गया, जिसने भाई स्वाद बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा रोचक स्वाद ले आया, किसमें, चाय में, मतलब पानी में, और वो पत्ते चाय के पत्तियां थी। अब सोचो, अब इसको मैं बोलूंगा इंग्लिश में बोलेंगे, तू बता, बहुत कर रहा है खुजल उजुर वहां से, 30 मिनट हो गए तेरे को, हाथ तेरा स्थिर बैठ नहीं रहा है, कभी मार्कर का पीछे मार रहा है तो कभी डेस्क को मार रहा है, चले जा रहा है। बता अभी यही चीज अभी अच्छे से बता, इंग्लिश में बता, कैसे लिखेगा, बता लेजेंड के बारे में बता, चाइना का बता भाई, आंसर तो है ही, मैं तो बता ही दिया आंसर, बता अभी, एक्सप्लेन कर। Emperor of China, one of the emperors of China, who used to like having boiled water every day. One day, a leaf fell into the boiling water, which gave it a delicious flavor. Those leaves are said to be of tea leaves. बस हो गया, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें, लेकिन जो तुमने तुम्हारा आंसर में पढ़ के आया हूँ स्कूल में, वो तो मुझे बहुत हार्ड लगा था। ये सब चाइनीज लेजेंड के ऊपर है, वही वाला, तो ये सब का आंसर एक ही है, वही। ठीक है, अच्छा है, समझ गए सब लोग, चैप्टर समझ में आया। ये तीनों चैप्टर को मिला के जो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे बोलूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तुमको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा उनको करके आना, ठीक है। मैं भेज दूंगा आज तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों चैप्टर के ऊपर, उस सवाल को बनाने हैं और आना। बनाना है मतलब कीवर्ड्स लिखना, कीवर्ड्स के अराउंड अपना आंसर खुद फॉर्म करना। ग्रामेटिकल एरर्स हो तो चलेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है, चलो फिर बंद करते हैं आज का क्लास।